morning students, this is Deepak Yadav from SURAJ group of schools Mahendragarh. Today we discuss about a very interesting topic, that is geometry. In our previous class we discussed about geometry, that is line segment, ray, line and angle, vertices, sides, and we discussed about angle and quadrilateral also. Today we discuss about types of angles. Types of angles. On the basis of their measurement. On the basis of their measurement. Firstly is zero angle. The angle whose measurement is 0 degree. Whose measurement is 0 degree is zero angle. Second is acute angle. Measurement is greater than 0 degree, 0 degree and less than 90 degree. The angle whose measurement is greater than 0 degree and less than 90 degree. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, वो एंगल अक्यूट एंगल होता है. नेक्स्ट इज right angle. The angle whose measurement is 90 degree. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, एक्जैक्ट 90, that is right angle. Next is obtuse angle. The angle whose measurement is greater than 90 degree, greater than 90 degree and less than 180 degree. The angle whose measurement is greater than 90 degree and less than 180 degree. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से तो ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा. मतलब 90 और 180 के इन बिटवीन जो भी मेजरमेंट होगा एंगल का, वो ऑब्ट्यूज एंगल में मेजर किया जाएगा. नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. एंगल whose measurement is 180 degree. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल होगा. स्ट्रेट एंगल के नाम से ही हमें शो हो रहा है कि जो एंगल स्ट्रेट सीधा होगा, दैट मीन जिसमें एक सीधी लाइन बनेगी जिस एंगल में, वो एंगल स्ट्रेट एंगल होगा. रिफ्लेक्स एंगल. Angle whose measurement is greater than 180 degree, greater than 180 and less than 360 degree. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ग्रेटर ज्यादा होगा एंड लेस देन 360 और 360 से कम होगा. दैट मीन जो एंगल 360 के इन बिटवीन में होगा, वो ही एंगल क्या होगा, एंगल होगा. देन उसके बाद में आता है कंप्लीट एंगल. दैट मीन वो एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होगा, जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होगा. दैट मीन वो एंगल जो 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, वो एंगल कंप्लीट एंगल होगा. एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम दोबारा से. जीरो एंगल, जिस एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री होगा, वो जीरो एंगल है. अक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा. राइट एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, वो राइट एंगल होगा. देन उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा. देन स्ट्रेट एंगल whose measurement is 180 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री 180 डिग्री होगा, वो स्ट्रेट एंगल होगा. रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360. वो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से तो ज़्यादा रहेगा और 360 से कम रहेगा.
एंड लास्ट इज कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, वो एंगल कंप्लीट एंगल होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में कि ट्राइंगल किस टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को समझने के लिए हमारे पास भी टाइप का पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने आपको पहले टाइप्स ऑफ एंगल करवाए हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं अब ट्राइंगल्स जो है वो किस टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। Triangles are of two types, on the basis of angles and on the basis of sides. Here is we put basis of sides. साइड बेसिस जो ट्राइंगल होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं और एंगल बेसिस जो ट्राइंगल होती हैं वो भी 3 ही टाइप की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, फर्स्टली here we know about scalene triangle. Scalene triangle कौन सी होती है? साइड बेसिस ट्राइंगल दैट मीन जो ट्राइंगल उसके साइड पे डिपेंड करती है वो यहाँ है। फर्स्टली हमने लिखा है स्केलेन ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हुज मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। दैट मीन एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स जो है वो अलग अलग मेजरमेंट, दैट मीन उनका मेजरमेंट आपस में मैच नहीं करता है। ऑल साइड्स आर ऑफ different sizes. Next is isosceles triangle. Next is isosceles triangle, a triangle whose any two sides are equal. एक ट्राइंगल जिसकी कोई भी 2 साइड अगर इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। Sides are equal. एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है वो ट्राइंगल होती है। एंड द नेक्स्ट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल जैसे कि आपको इसके नाम से शो हो रहा है, एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, जिनमें तीनों साइडों का जो मेजरमेंट है, साइड जो है वो इक्वल होता है, दैट इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल। These are the 3 types of triangle here on the basis of sides, that is scalene triangle. All sides are of different size. Second is isosceles triangle, 2 sides are equal. Third is triangle, all sides are equal. Now here we put the triangle basis of angles. जो angles पे डिपेंड करती हैं ट्राइंगल्स वो कौन कौन सी होती है। फर्स्ट इज acute angled triangle. Acute angled triangle. Acute angle triangle कौन सी ट्राइंगल होती है? वो ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल वेयर all the angles are of acute angle size. That means all the angles are of less than 90 degree. All angles are acute. That means less than, acute means less than 90 degree. Are acute, that means all angles are less than 90 degree. That is acute is obtuse angled triangle. A triangle whose one angle is obtuse. Obtuse means greater than 90. Greater than
whose one angle is obtuse, that means one angle, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा, that is obtuse angle triangle. And the third is right angled triangle. And third is right angled triangle. जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल आपने पढ़ा था, मैंने अभी आपको एंगल के बारे में बताया था, तो राइट एंगल कौन सा आता था जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, दैट मीन ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, दैट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. एंड देयर आर टू नोट्स हियर. Here is also a knot and here is also a knot. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. That means एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम एट 180 डिग्री होना चाहिए. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. And here is the note is that sum of any two sides are always greater than third side, greater than third side. एक ट्राइंगल जिसकी किन्हीं भी दो साइड्स का सम, दैट मीन मेजरमेंट का सम, किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए. अगर कम होगा तो वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगी, दैट मीन वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगी. अगर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. अगर उन सभी एंगल्स का सम 180 नहीं है, या तो 180 से ज्यादा है या 180 से कम है, दैट मीन वो ट्राइंगल भी पॉसिबल नहीं है, वो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगी. So there are these types of triangle, that is basis of side and basis of angle. Angle basis कौन सी ट्राइंगल होती है, यहाँ है. साइड बेसिस कौन सी ट्राइंगल होती है, वो यहाँ है. दैट मीन साइड बेसिस में स्केलर ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें अलग अलग साइज की होती हैं. आइसोसेलेस साइडें इक्वल होती हैं. इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसमें सारी ही साइडें इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती हैं. और यहाँ पे एक नोट है दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ आर ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा. बेसिस ऑफ एंगल, एंगल बेसिस कौन सी ट्राइंगल होती है, अक्यूट एंगल ट्राइंगल. वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी उसमें सारे एंगल अक्यूट होंगे, ऑल एंगल्स आर अक्यूट, जिसमें सारे एंगल अक्यूट होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे. एंड द नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, जिसमें कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, दैट मीन ग्रेटर देन 90 डिग्री. एंड द लास्ट इज दैट राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो होगी राइट एंगल्ड ट्राइंगल. एंड हियर इज द नोट इज दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. सॉरी, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. अगर वो कम है या ज्यादा है, दैट मीन दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. यहाँ भी इस नोट के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए. अगर वो कम है तो वो भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है. एक बात और है कि कुछ बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज क्यों कहा, और यहाँ अक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स आर अक्यूट क्यों बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, उसके तीन एंगल हैं. मैंने बोला कि एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, दैट मीन 90 से ज्यादा होना चाहिए. मान लीजिए मैंने ये एंगल 100 डिग्री कर दिया, तो बाकी के एंगल कितने बचेंगे, दैट इज दिस एंगल इज 50 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 30 डिग्री. Because sum of all angles is 180 degree. 100, that is 50. 150 plus 30, 180 degree. Sum is 180. If I put here two angles obtuse, that means this is 100 and this is 100. Then sum of these two is 200. इन्हीं दो एंगल्स का सम 200 होगा. That means ट्राइंगल के तो सारे एंगल्स का सम 180 होता है, या तो किन्हीं दो ही एंगल का सम 200 होगा. That means this is not fair. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज लेना पड़ेगा. अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज होते हैं, दैट मीन वो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगी, वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होगी. सो दीज
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है।